Good morning, dear students. Today we will write an application. We have done the half work from our reader book and the half work syllabus from our good grammar book. So from today we will do that writing part of our grammar. So today we are writing first application, and the application is write an application to the principal for section change. If we want to change our section, so how we will write the application? Mostly application that we write in school, the pattern will be same. I think you all know how to write an application. You all know the pattern that we have done in class 2nd, 3rd, 4th also. So this is your application. The principal, you must know that T will be capital, P will be capital. Om International Public School, Juglan, Hisar. Then date, whatsoever the date is, you will write here. Then subject. Subject will be the same, that questions in question what have given to us, we will write the same in our subject. For example, if we have given the sick leave or urgent piece of work, so we should here write subject application for sick leave, application for urgent piece of work. Now we are writing the application for section change because it is given to us. So whatever is given here, we will write here. This will be the subject. Then respected sir. This pattern will remain the same, like after the principal we will write the school name. From the same pattern we will follow in every application. Then we will write address, then we will write date, subject, respected sir. This pattern will remain same in most of the application. With due respect, I want to say that I am student of 5th B of your school. With respect, I want to say that I am student of 5th B of your school. I shall feel obliged. Obliged का मतलब होता है आभारी होना, thankful होना, like ना. I shall feel obliged, this is G, if you allow me to change my section from B to A. मैं आपका बहुत ज़्यादा obliged फील करूँगा अगर आप मुझे सेक्शन B से सेक्शन A में अगर आप मुझे चेंज कर देते हो, मतलब आप मुझे अलाउ करते हो चेंज करने के लिए. Many of my friends are my neighbors. मेरे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो मेरे नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं मेरे. They read in section A. वो सब कौन से सेक्शन में है? A में. If I am transferred to A section, we shall all be together. अगर मैं सेक्शन A में ट्रांसफ़र होता हूँ तो हम सब साथ हो जाएंगे. गप्पे मारने के लिए साथ नहीं होना है, दोस्तों के साथ. रीज़न क्या दे रहा है? दैट वे आई शैल बी एबल टू डू बेटर इन माई स्टडीज़. कैसे? अगर कभी आपका नेबर, अगर कोई आपका फ्रेंड जो आपके सेक्शन में है, अगर वो आपके नेबर में भी है, किसी दिन अगर स्कूल हम नहीं आ पाते तो उसने सारा वर्क किया होगा, तो हम घर पे ही हमें सारा वर्क का आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या वर्क मिला है, और वो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों सेम सेक्शन के हैं. यहाँ पे रीज़न ये है. इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड है तो हम आराम से लड़ाई झगड़ा और बातचीत जल्दी कर लेंगे, वो सब नहीं है. ठीक है. आई शैल बी एबल टू डू बेटर इन माई स्टडीज़. आई एम श्योर दैट यू विल अलाउ मी दिस चेंज. मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि आप मेरे को ये चेंज अलाउ करोगे. थैंकिंग यू
यस ओबीडियंटली आपका नेम और आपकी क्लास। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से कर लेते हैं। द पैटर्न विल रिमेन द सेम। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 5th B of your school. I shall feel obliged if you allow me to change my section from B to A. Many of my friends are my neighbors. They read in section A. If I am transferred to A section, we shall all be together. That way, I shall be able to do better in my studies. I am sure that you will allow me this change. Thanking you. Yours obediently, name and your class. So this application you will write in your English notebook. Firstly, you will write the application in the same pattern. Don't write this like here you start Om International Public School and then elsewhere you will write Juglan and Hisar. No, this will be remain in the same pattern. You will write this in your English notebook properly. I will not send you any kind of pic. Just you see the video carefully. I have repeated 2 times. Then by watching the video you will write this application and you will learn also. Once again I will focus the application so that you can write properly. Everything you can see here, and you must watch the video again and again so that you can understand the matter also. This is the main matter. This will remain almost the same for every application, but this will differ. ये डिफ़र करेगा कि हमें एग्जैक्टली एप्लीकेशन में लिखना क्या है. सो डू दैट. फर्स्टली वॉच द वीडियो, then understand the application, then write it and learn also.